हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चल तो रही है भाई, वीडियो एक बार देख लेते हैं। भाई ये फोन डाला ही हुआ है। हाँ ठीक है। आज थोड़ा सा भाई तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ही दिखेगा, बट कोई बात नहीं। आज चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। बहुत दिन हो गए भाई इस चैप्टर को, तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। स्पॉन्टेनिटी ये बचा हुआ है थोड़ा सा तो पहले पूरे इंग्लिश जितनी बची वो सारी पढ़ूंगा, फिर मैं बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। The first law of thermodynamics tells us about the relationship between the heat absorbed and the work performed on or by the system. It puts no restrictions on the direction of heat flow. However, the flow of heat is unidirectionally from higher temperature to lower temperature. In fact, all naturally occurring processes, whether chemical or physical, will tend to process spontaneously in one direction only. For example, a gas expanding to fill the available volume burning carbon dioxide given carbon dioxide, but heat will not flow from colder body to warmer body on its own. The gas in a container will not spontaneously contract into one corner, or carbon dioxide will not form carbon dioxide simultaneously. These and many other spontaneously occurring changes show a directionally change. We may ask, what is the driving forces of spontaneously occurring changes? What determines the direction of a spontaneous change? In this section, we shall establish some criteria for these processes, whether these will take place or not. Let us first understand what do we mean by spontaneous reaction or change. You may think by your common observation that spontaneous reaction is one way and which occur immediately when contact is made between the reactant and take the case of combustion of hydrogen and oxygen. These gases may be mixed at room temperature and left for many years without observing any perceptible change. Although the reaction is taking place between them, it is at an extremely slow rate and it is still called spontaneous reaction. So spontaneity means having the potential to proceed without assistance of external agency. However, it does not tell about the rate of the reaction or process. Another aspect of spontaneous reaction or process, as we see, is that these cannot reverse their direction on their own. We may summarize as it follows. A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. Mummy, mummy, मम्मी, गेट खोल दियो। गेट खोला है, वीडियो बनाओ। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है भाई, और वो तभी रिवर्स होगी जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाई जाए। अब आ जाओ, इसके कुछ पार्ट हैं। ए इज डिक्रीज इन एंथैल्पी इज डिक्रीज इन एंथैल्पी इज डिक्रीज इन एंथैल्पी a criterion for spontaneity. If we example the phenomena like flow of water downhill or fall of a stone onto the ground, we find that there is a net decrease in potential energy in the direction of change. By analogy, we may be attempted to state that a chemical reaction is spontaneous in a given direction because decrease in energy has takes place, as in the case of exothermic reaction. For example, half N2 plus 3 by 2 H2 forms NH3, and half H2 plus half Cl form HCl. H2 plus half O2 forms pani. The decrease in enthalpy in passing from reactant to product may be shown from any exothermic reaction or an enthalpy diagram as shown in figure 6.10a. Thus, the postulate that driving forces for a chemical reaction may be due to decrease in energy sound reasonable as the basis of the evidence so far. Now, let us examine the following reaction: half N2 plus O2 forms NO2, and carbon plus Ca2 sulfur forms CH2. And therefore, it becomes obvious that while decrease in enthalpy may be a contributory factor for spontaneity, but it is not true for all cases. Entropy and spontaneity. Then, what drives the spontaneous process in a given direction? Let us examine such a case in which entropy is equal to 0. There is no change in enthalpy, but still the process is spontaneous. Let us consider diffusion of two gases into each other in a closed container which is isolated from the surrounding as shown in figure 6.11. The two gases, say A gas A and gas B, are represented by black dots and white dots respectively and separated by a movable partition. When the partition is withdrawn, the gas begins to diffuse into each other, and after a period of time, diffusion will be complete. Let us examine the process before partition. If we were to pick up the gas molecules from left container, we would be sure that these will be molecules of gas A, and similarly, if we were to pick up the gas molecules from right container, we will be sure that these will be molecules of the gas B. But if we were to pick up molecules from container when partition is removed, we are not sure whether the molecules picked are of a gas A or gas B.
We say that the system has become less predictable or more chaotic. We may now formulate another postulate in an isolated system. There is always a tendency for the system energy to become more disordered or chaotic, and this would be a criterion for spontaneous change. At this point, we introduce another thermodynamic function, entropy, denoted as S, and the above mentioned distortion is the manifestation of entropy. The formula of a mental picture, one can think of entropy is a measure of the degree of randomness or disorder of the system. Entropy definition of a degree of randomness or disorder in the system. The greater the disorder of an isolated system, the higher is the entropy. As far as the chemical reaction is concerned, the entropy change can be attributed to rearrangement of atoms or ions from one pattern to the reactant to another in the product. If the structure of the product is very much distorted than that of the reactants, there will be a resultant increase in entropy, and the change in entropy accompanying a chemical reaction may be estimated qualitatively by a consideration of the structure of the species taking part in the reaction. Degrees of regularity in structure will mean increase in entropy for a given substance. The crystalline solid states is the states of the lowest entropy, most ordered, and the gaseous states is the state of high entropy. Now let us try to qualify. Now let us try to quantify entropy. One way to calculate the degree of disorder or chaotic distribution of energy among molecules will be through statistical method, which will is beyond the scope of this treatment. Other way will be to relate this process to the heat involved in the process, which will make entropy a thermodynamic concept. Entropy, like any other thermodynamic property such as internal energy and enthalpy, is a state function and change in enthalpy independent of path. Whenever heat is added to the system, it increases molecular emotions, causing increased randomness of the system, and thus heat and the randomizing influence on the system. And it can we then equate delta S with Q with experience suggests that the distribution of heat also depends on the temperature at which heat is added to the system. A system at higher temperature has greater randomness in it than one at lower temperature. Thus, temperature is the measure of average kinetic motion of particles in the system. Heat added to a system at lower temperature causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to it at high temperature. This suggests that the entropy change is inversely proportional to the temperature, so delta is related with Q and T for the reversible reaction. So change in entropy is equal to Q reversible divided temperature. The total entropy for the system and surrounding for a spontaneous process given as delta S total is equal to delta S system plus delta surrounding greater than 0. When a system is in equilibrium, the entropy is maximum and the change in entropy delta S is equal to 0. We can say that entropy for the spontaneous process increases till it reaches maximum and at equilibrium the change in entropy is 0. Since the entropy is a state property, we can calculate the change in property of a reversible process by delta S system is equal to delta system reversible divided by T. And we find that both reversible and irreversible expansion for application the isothermal condition delta is equal to 0, but delta S total is equal to delta S system plus surrounding is not 0 for reversible process. Thus, delta U does not discriminate between reversible and irreversible process, whether delta S does. So, Gibbs free energy and spontaneity, a relation between the Gibbs free energy and storm. We have seen that for a system, it is the total entropy change delta S total which decides the spontaneity of the process. But most of the chemical reactions falls into the category of either closed system or open system. Therefore, for most of the chemical reaction, there are changes in both enthalpy and entropy. It is clear from the discussion in previous sections that neither decrease in enthalpy nor increase in entropy alone can determine the direction of a spontaneous change for these systems. For this purpose, we defined a new thermodynamic function for Gibbs energy or Gibbs function is equal to G is equal to S minus Ts. Gibbs function G is an extensive property and G is a state function. The change in Gibbs energy for the system delta G system can be written as delta G system is equal to delta S minus T delta S minus K system delta T. At constant temperature delta T is equal to delta G system is delta S minus T delta T. Usually the script system is dropped and we simply written as the equation delta G is equal to delta S minus T delta S. The Gibbs free energy change is equal to enthalpy change minus temperature into entropy change and is referred to as Gibbs equation. One of the most important equations in chemistry. Here we have considered both terms together for spontaneity, energy in terms of delta H and delta and entropy delta H. A measure of disorder as indicated earlier. Dimensionally, if we analyze, we find that delta G has units of energy because both delta H and the T delta S are energy terms since T delta S is equal to K. Now, let us consider how delta G related to reaction spontaneity. So, delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding. If the system is in thermal equilibrium with the surrounding, then the temperature of the surrounding is same as that of the system. Also, increase the enthalpy of the surrounding is equal to decrease in the enthalpy of the system. Therefore, entropy change of the surrounding delta S surrounding divided by T is equal to minus delta system. So, delta S system is enthalpy change of reaction and T delta S is the energy which is not available for the doing useful work. So there are some points. The delta G as a criteria for spontaneity for a constant present temperature.
When delta G will be negative, less than the process is spontaneous. When delta G is positive, then the process is non-spontaneous. And it happens when delta G is equal to delta S minus T delta S. It happens when delta H is greater than 0 and delta S will be something which I want to tell. So the positive entropy change of the system can be large, in which the case temperature is small. The formal is the one of the reason why reactions are often carried out at high temperature. Entropy and the second law of thermodynamics. We know that for isolated system, the change in energy remains constant. Therefore, increase in entropy in such a system is the natural direction of the spontaneous change. This, in fact, is the second law of the thermodynamics. Like first law of the thermodynamics, second law can also be stated in several ways. The second law of thermodynamics explains why spontaneous exothermic reactions are so common. In exothermic reaction, heat released by the reaction increases the result of the surrounding and overall entropy change in the positive, which makes the reaction spontaneous. Absolute entropy and third law of thermodynamics. The enthalpy of a pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolutely zero, and this is called the third law of thermodynamics. When the delta is equal to zero, then the temperature will be zero, and this is the third law of thermodynamics. Now the fourth one, Gibbs energy change and the equilibrium relation between the Gibbs free energy. So the simply we have seen how a knowledge of the sign and the magnetic free energy change of chemical reaction follows. Prediction of spontaneity of the chemical reaction, prediction of the useful work that could be extracted from it. So from this we see a equilibrium state A plus B reactant forms C plus D product. And delta RG gives energy for reaction units all the reactant and product in standard states. And delta RG is related to equilibrium constant of the reaction as follows. So delta G is equal to minus RT ln K, and when ln हटाओ delta G is equal to minus 2.30 RT log K. So delta G is equal to delta H minus T delta G is equal to minus RT ln K. So it's a reaction, and so it is possible to obtain and estimate delta G from the measurement of delta S and delta S, and then calculate K at any temperature or exothermic temperature. And if K is measured directly in the laboratory, value of delta G at any other temperature can be calculated. तो भाई आज चैप्टर खत्म हो गए, और क्या क्या चीज़ें की वो मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात की, तो स्पॉन्टेनिटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, लेकिन भाई उसके अंदर कोई भी मतलब एक्सटर्नल एजेंट को लगाया जाता है तो वो प्रोसेस रिवर्स भी हो जाती है। उसके बाद में भाई एंट्रोपी के बारे में डिनोट किया। एंट्रोपी जो होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, और डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी के बराबर होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई टेम्परेचर के। ठीक है, ये बात याद रखना। और डेल्टा एस टोटल अगर देखोगे तो सिस्टम प्लस का सराउंडिंग के बराबर आएगी एंट्रोपी। ठीक है, ये एंट्रोपी का फार्मूला सिंपल सा होता है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन टोटल एंट्रोपी देखो तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बराबर आएगी। उसके बाद में इसने गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी का एक रिलेशन निकाला, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी तुम्हें पता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस तुम्हें पता है एंथैल्पी, टेम्परेचर पता है, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, ये एक आया। उसके बाद में एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मल, उसके बाद में एक सिंपल से फंडे बताया, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और भाई डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एच के बराबर आएगा। तो डेल्टा जी अगर अपन को नेगेटिव करना है तो क्या आना चाहिए, डेल्टा एच जो हो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, सिंपल सी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से कर रहा है, इसने लिख भी रखा है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, मतलब कि डेल्टा एच को ग्रेटर देन जीरो करोगे और आप ये मान सकते हो तो प्रोसेस क्या हो, डेल्टा जी डेल्टा, अच्छा मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एच, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस, और गिब्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव आई तो प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। बस ये याद रख लो, सिंपल सा पूछ लेगा। ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद में एंट्रोपी डेल्टा एस और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इधर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बहुत सारे वेज में बताया गया है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट को रिलीज किया जाता है रिएक्शन से और इंक्रीज करता है उसकी सराउंडिंग के अंदर, और ओवरऑल एंट्रोपी चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है, जो कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाती है। ठीक है, तो इससे यहाँ से पता चला कि एंट्रोपी की वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी रिएक्शन मतलब कि क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ये बात तो सिंपल है। तो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या फंडा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये बताया कि भाई साहब सिंपल सा फंडा है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी जब आप हीट को सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर करोगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने ये बताया कि जब एंट्रोपी, हाँ जब एंट्रोपी आप जीरो करते हो टेम्परेचर भी जीरो आ जाएगा, और यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है।
उसके बाद इक्विलिब्रियम, गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम से रिएक्शन से रिलेशन दिखा, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के बराबर है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लोग के बराबर आ गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एच के बराबर आएगा माइनस का आर टी एल एन के बराबर आ गया। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ भाई तुम्हें। फॉर्मूले पता चल गया स्पॉन्टेनियस के। एक तो एंट्रोपी पता होना चाहिए, एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंपल सा फॉर्मूला आया है, रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, तो इन्वर्सली रिलेशन है, 4 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद में भाई गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनियस का रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस। उसके बाद में ये बताया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस कब है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जब गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ जाएगी, और गिब्स फ्री एनर्जी जब पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, एंट्रोपी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये बात भी याद रखना। वो क्यों? वो इसलिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस होता है। तो अगर डेल्टा एस को नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आएगी, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसलिए तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब जा करके टी डेल्टा एस बड़ा होगा ना डेल्टा एच से, एंथैल्पी से, तभी तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसलिए। तो तुम्हें सिंपल से फंडे याद है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हीट को सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर किया जाए, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके अंदर हीट जो सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि भाई जब अपन रिएक्शंस करते हैं, जब एंट्रोपी की वैल्यू जीरो आ जाती है और उसके बाद में टेम्परेचर की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब कि वे हन एवर इन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बिकम जीरो, देन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो बिकम जीरो, एंड दिस इज ऑल्सो द कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिंपल सा। और भाई साहब आगे गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम आएगा आगे चैप्टर, तो उसका रिलेशन बनाएंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के बराबर आता है। ये सिंपल सा फंडा है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एल एन वो हटाओगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का 2.303 लोग के बराबर आ गया आर टी। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लोग के बराबर आ गया। तो ये सिंपल सा रिलेशन था। तो आज चैप्टर खत्म हो गया भाई। बाकी तुम्हें सिंपल सा तो ये याद रखना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, 4 नंबर आ जाते हैं आराम से। तो अभी वीडियो को बंद कर देते हैं, आज चैप्टर खत्म हो गया। बाय बाय भाई।